see that TV scanner is also shown there, and backscattered electron detectors are there, secondary electron detector is there, and here our sample is kept. So all the signals are produced from right there, especially the secondary electrons and backscattered electrons. So that is, this is the diagram of instrument, which is, there in case of scanning electron microscopy. So I'm moving further, and I think the slide is again not moving, right? Okay, No, it is ma'am, moving. it's fine. It's fine. It's Okay. moving. So this is a more concise diagram of instrument. The electron gun is there, electron beam is produced, and this work as anode. And then condenser lenses are there, scanning coils are there, and here the secondary electron detector, backscattered electron detector, and sample stage is there, where we can have our sample. We can have the scanning electron images of several samples at a time. It means हम बहुत सारे सैंपल एक साथ रख सकते हैं और उन सैंपल्स की इमेज हम रिकॉर्ड कर सकते हैं. इसमें हम आगे मूव कर रहे हैं. How does it work? So an electron source is there. It means electron gun is there, which is also referred to as an electron gun, which emits electrons that get accelerated by an applied voltage. Magnetic lenses converts the stream of electrons into a focused beam. So that is the application of magnetic lenses there, why they are used there, which then hits the sample surface in a fine, precise spot. The electron beam then scans the surface of the specimen in a rectangular raster. The user can increase the magnification by reducing the size of the scanned area on the specimen. So that we have to do manually there. Detectors collect the backscattered and secondary electrons. The corresponding signals are measured and values are mapped as variations in brightness on the image display. So TV scanner, all things are there. They are attached with the instruments. So that the secondary electrons are more frequently used as readout signal. They highlight the topography of the sample surface. So this diagram is basically showing electron specimen interaction. This takes place when electron beam interacts with the sample. So you can see incident beam is there. That is there's a high energetic beam, that is in kilovolt. Electron beam is there, which is interacting with the sample. So there are several signals. You can see secondary electrons, backscattered electrons, characteristic X-rays, visible light, OJ electrons, elastically scattered electrons, and direct beam is also, without having any effect is also can be there, inelastically scattered electrons, and bremsellum X-rays. So all these signals can be produced there upon the interaction with electron and sample specimen. So I am explaining one by one. The backscattered electrons, although I told you already, but again I am repeating. The formation caused by an incident electron colliding with an atom in the specimen, which is nearly normal to the incident path. The incident electron is then scattered backward 180 degrees. So it is basically the interaction of electron with the nucleus of the specimen atom. So its utilization is in the production of backscattered electrons varies directly with the specimen's atomic number. This differing production rates causes higher atomic number elements to appear brighter than lower atomic number elements. So it depends on the atomic number of the elements. This interaction is utilized to differentiate parts of specimen that have different average atomic number. Then secondary electrons. It caused by an incident electron passing near an atom in the specimen, near enough to impart some of its energy to a lower energy electron, usually in the K shell. This causes a slight energy loss and path change in the incident electron and ionization of the electron in the specimen atom. This ionized electron then leaves the atom with a very small kinetic energy, that is 5 electron volt, and is then termed a secondary electron. And each incident electron can produce several secondary electrons, and it has its own utilization. Production of secondary electrons is very topography related due to their low energy 5 electron volt. Only secondary electrons that are very near to the surface, that is less than 10 nanometer, can exit the sample and be examined. Now OJ electrons.
So it is caused by the de-energization of the specimen atom after a secondary electron is produced. Since the lower shell is the K shell, electron was emitted from the atom during the secondary electron process, and inner shell now has a vacancy. So when the electron from K shell will leave, obviously vacancy will be created there. So it produces an inner shell vacancy. A high energy electron from the same atom can fall to the lower energy. तो suppose k इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन एल शेल में जाता है, सेम टाइम में एल शेल से इलेक्ट्रॉन जो है जो उसकी वैकेंसी के शेल में क्रिएट हुई है उसको आके फिल कर लेता है. तो इस प्रोसेस के समय क्या होगा, ये आपकी जो मिक्सचर जो आपका फिल होगी वैकेंसी, इसमें कुछ एनर्जी रिलीज होगी. This creates an energy surplus in the atom which can be corrected by emitted an outer इलेक्ट्रॉन दैट इज एन ओजे इलेक्ट्रॉन. तो जो इसमें एनर्जी एमिट होती है ये दूसरे आउटर इलेक्ट्रॉन को पास हो जाती है और वो वहां से स्केप कर जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एन ओजे इलेक्ट्रॉन. So it has its own utilization. OJ electron have a characteristic energy unique to each element from which it was emitted from. These electrons are collected and sorted according to energy to give compositional information about the specimen. So कौन से composition क्या एलिमेंट प्रेजेंट है, इसकी हेल्प से ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. क्योंकि ये जो ओजे इलेक्ट्रॉन आपका सरफेस से स्केप करता है इसकी भी अपनी एनर्जी होती है. उस एनर्जी के अकॉर्डिंग आप वेवलेंथ उसकी निकाल सकते हैं. उससे आपको पता लग सकता है कि कौन सा कंपोजिशन आपके मटेरियल की सरफेस पे प्रेजेंट है. Then we have another signal that is X-rays. So it has also its own role. It's caused by the excitement of the specimen after specimen atom after a secondary electron is produced. Since a lower usually K shell electron was emitted from the atom during the secondary electron process, and inner shell now has a vacancy. A high energy electron can fall into the lower energy shell, filling the vacancy. As the electron falls, it emits energy. So usually X-rays to balance the total energy of the atom. So it sets its own utilization. X-rays of light emitted from the atom will have a characteristic energy which is unique to the element from which it is originated. So it has its own role. Now some electrons are unscattered electrons. So incident electrons which are transmitted through the thin specimen without any interaction, or we can say direct beam, which I have already shown you in the diagram, without any interaction occurring inside the specimen. So the transmission of unscattered electron is inversely proportional to the specimen thickness. Areas of the specimen that are thicker will have fewer transmitted unscattered electrons and so will appear darker. Conversely, the thinner areas will have more transmitted electrons and thus will appear lighter. So इसके इमेज से आप ये भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसमें अनस्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है कि नहीं है. तो ये भी यहाँ पे आप इसकी इमेज से डिटेक्ट हो सकता है. जो इलेक्ट्रॉन्स आपके डायरेक्ट पास हो रहे हैं, इतनी डायरेक्ट ट्रांसमिट हो रहे हैं, उस पर आप इसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल सकती है. Now elastically scattered electrons can be there also. So incident electrons that are scattered, that is deflected from their original path by atoms in the specimen in an elastic fashion, that is no loss of energy. Elastic scattering means when there is no loss of energy, and inelastic scattering means where we may have loss of energy. So these scattered electrons are then transmitted to the remaining portion of the specimen. So all electrons follow Bragg's law and thus are scattered accordingly between the atoms in the specimen. All incident electrons have the same energy, and so obviously they have same wavelength and enter the specimen normal to its surface. All incident electrons that are scattered by some atomic spacing will be scattered by same angle. This similar angle scattered electrons can be collated using magnetic lenses to form a pattern of spots, each spots corresponding to a specific atomic spacing. This pattern can yield information about the orientation, atomic arrangement, and phases present in the area being examined. So these elastically scattered electrons, basically it can give information about the material's crystal structure orientation, which kind of atomic arrangement it is having, what are the phases which are present in the sample, the area being examined, जिस एरिया पे आपकी इस बीम इंटरेक्शन हो रहा है वहाँ पे आपका किस तरीके का एटॉमिक अरेंजमेंट है, किस तरीके का ओरिएंटेशन है, कौन से फेजेस प्रेजेंट हैं, ये सारी चीजें इलास्टिकली स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की हेल्प से डिटेक्ट की जा सकती हैं. Then we may have inelastically scattered electrons also. So incident electrons that interact with specimen atoms in an inelastic fashion
losing energy during the interaction. It means they are losing energy during the interaction. So these electrons are then transmitted to the rest of the specimen. So electron energy loss spectroscopy, basically this is the concept from electron energy loss spectroscopy. So the inelastic loss of energy by the incident electron is characteristic of the elements that were interacted with. So these energies are unique to each bonding state of each element and thus can be used to extract both compositional and bonding, that is oxidation state information on the specimen region being examined. So this has its own application. So both elastically and inelastically scattered electrons can be utilized to know the information about the surface. Now, before we start SEM measurement, we have to prepare our sample. So there are certain conditions that we must follow to have this SEM characterization. Like sample should be in vacuum, sample should be very clean, and we have to follow. So I am discussing one by one. Samples for conventional SEM generally have to be clean, dry, vacuum compatible, and ideally electrically conductive. So these are the foremost conditions. इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होना चाहिए, वैक्यूम में सिस्टम ये पूरा आपका ऑपरेट होता है. So I am discussing one by one. An ultra high vacuum system is indispensable for SEM in order to avoid the scattering of electron beam and contamination of the electron guns and other components. इसको अवॉइड करने के लिए जैसे हम अपना मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं, पहले हम इसको वैक्यूम में कर लेते हैं, जिससे कि जो हमारी इलेक्ट्रॉन्स की बीम से जो इलेक्ट्रॉन गन की हेल्प से जो इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस हो रही है, उसमें मतलब किसी भी तरीके की स्कैटरिंग ना हो इलेक्ट्रॉन्स की, किसी भी तरीके का कंटामिनेशन ना हो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन गन्स और अदर कंपोनेंट्स. तो उसके लिए वैक्यूम को क्रिएट किया जाता है. टिपिकल वैक्यूम सिस्टम कंसिस्ट ऑफ चैम्बर दैट होल्ड्स वैक्यूम. वैक्यूम सिस्टम जो है वो आपका सेम इंस्ट्रूमेंट के साथ ही एसोसिएटेड रहता है. Pumps to produce vacuum, valves to control vacuum, and gauge to monitor vacuum. Generally, a mechanical pump and diffusion pumps are utilized to pump down the chamber from atmospheric pressure. तो उतने प्रेशर को क्रिएट करने के लिए इसमें डिफ्यूजन पंप और मैकेनिकल पंप को यूज किया जाता है, जिसमें हमारा जो है वैक्यूम में मेजरमेंट हो सके. If the specimen contains any volatile components such as water, they must be removed by a drying process. तो इस पे मतलब मटेरियल शुड बी ड्राई, उसमें कोई भी वाटर कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, वेट नहीं होना चाहिए. तो उसको ड्राई करके ही हम मेजरमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज हमारी जो इमेज आएगी सैंपल की वो ब्लर्ड आती है. और इन सम सर्कमस्टांसेस इट कैन बी फ्रोजन सॉलिड बिफोर दे कैन बी यूज्ड इन अ हाई वैक्यूम system. Then sample should be conducting. It means non-conducting specimen will accumulate charge. Why it is so? Because अगर sample आपका conducting नहीं होगा, non-conducting होगा, तो ये अपने surface पे क्या करेगा, charges को accumulate करेगा under electron bombardment and may need to be coated with a conducting material such as iridium, carbon, gold, silver or any other metal or alloy. Iridium gives a fine grain coating and is easily applied as sputter coater. तो डीसी स्पटरिंग यूनिट वहीं पर आपकी यूनिट रहती है एसोसिएटेड सेम सिस्टम के साथ, जिसकी हेल्प से आप अपने जिस भी मटेरियल का आपको सेम करना है उसके ऊपर आप मेटेलिक लेयर की कोटिंग कर सकते हैं. So it gives a good yield of secondary electrons and consequently a good quality image of the surface. So metal coatings are more effective for high resolution इलेक्ट्रॉन इमेजिंग एप्लीकेशन. तो इसमें जो इमेज की जो क्वालिटी है इन टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन वो भी इंक्रीज करती है. So there is no restriction on specimen size other than that set by the size of the specimen chamber. तो इसमें वैसे तो साइज की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी आपके स्पेसिफिकेशन है उनको फॉलो करना होता है. सो द वेरियस सैम मॉडल्स इन अ रेंज डिफर इन द साइज ऑफ द स्पेसिमेन चैम्बर. इसको स्टप कहते हैं, जिसपे सैंपल को रखा जाता है, जो होल्डर होता है जिसमें सैंपल को रखा जाता है उसको स्टप कहते हैं. तो उसकी कुछ अपनी डायमेंशन रहती है जिसको फॉलो करना पड़ता है और ये इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट आपकी वेरी करती है. Allowing various sizes of manipulated. Then there are several advantages and applications of scanning electron microscopy. The SAM has a magnification range from 20x to 150,000x that enables a spatial resolution of 50 to 100 nanometer. Clay particles and fracture surfaces through soil masses may be viewed directly. Minimal sample preparation is required. Data acquisition is rapid. Each image can be generated in less than 5 minutes. ओवरऑल टाइम लगता है सैंपल प्रिपरेशन में, आप वैक्यूम में करते हैं वो भी वैक्यूम आने में टाइम लगता है, बट अदरवाइज जो मेन मेजरमेंट है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. सो द कॉम्बिनेशन ऑफ हायर मैग्निफिकेशन, लार्जर डेप्थ of field, greater resolution and compositional and crystallographic information
makes the SEM one of the most widely used instruments in academic oblique national labs, research areas, and industry for the study of clays and several other minerals. Modern scanning electron microscopes generate data in a digital format, which are portable. So, typical application include the study of the topography and morphology, as well as mineralogist identification and composition. So, minerals की भी इसमें easily एनालिसिस की जा सकती है कि कौन सा क्या कंपोजिशन प्रेजेंट है, सारी चीज़ें इससे आइडेंटिफाई हो सकती हैं. अब सैम के साथ ही आपका एक एसोसिएटेड टॉपिक है और सैम के इंस्ट्रूमेंट के साथ ही ये भी एसोसिएटेड है, डेट इज इनर्जी डिस्पर्सिव एक्सरे एनालिसिस. तो सैम से आप इस सरफेस की मॉर्फोलॉजी जान सकते हैं, लेकिन टू हैव वेरी प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ कंपोजिशन ये एनर्जी डिस्पर्सिव एक्सरे एनालिसिस यूज की जाती है. तो इसका पहले मैं इंट्रोडक्शन आपको देते हैं. इसका जो फुल फॉर्म है डेट इज इनर्जी डिस्पर्सिव एक्सरे एनालिसिस, दैट इज ईडीएक्स. तो आपने कई जगह देखा होगा सेम ईडीएक्स एक साथ लिखा जाता है. तो जब भी कंपोजिशनल एनालिसिस करनी होती है उसमें साथ में ये आपका साथ में ही सेम इंस्ट्रूमेंट के ही होता है. इसमें हमें एनर्जी ईडीएस करना होता है जिससे हमको प्रिसाइज कंपोजिशन मिल जाए. Surface analysis, chemical analysis, and imaging on a variety of materials are performed using a scanning electron microscope. The scanning electron microscope is also equipped with an energy dispersive spectrometer. SAM EDS provides chemical analysis of the field of view or spot analysis of minute particles. More than 90 elements from the periodic table can be detected with low atomic number detector using the SAM EDS method. स्लाइड मैम चेंज नहीं हुई है फिर से. स्लाइड चेंज नहीं हुई. ओके, आई एम चेकिंग. Wait, I think some network issue is there. I'm just trying to solve it. Just wait.
Sorry, students, I think there is no network. I was giving with the help of desktop, and I think university network is not working. So I will be covering this energy dispersive X-ray analysis in my next lecture. So for today, I'm ending here. If you have any question, please ask. Do you have any question? Anyone, please reply if you have any question. No, ma'am. So everything is clear, or if you have any query, please ask. Akhilesh, Kajal, Kamal. यस मैम हाँ पूछिए पूछिए। कुछ नहीं पूछना मैम। अच्छा ठीक है, फिर मैं आपको ये एनर्जी डिस्पर्सिव वाला नेक्स्ट क्लास में कवर कर दूंगी जब भी शेड्यूल होगी, क्योंकि ये अभी यूनिवर्सिटी का नेटवर्क चला गया है एक्चुअली, इस वजह से मैं आगे शेयर नहीं कर पा रही हूँ। ओके मैम। ओके मैम। ओके ओके, तो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा या ईमेल कर दीजिएगा। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू। ये मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, आप लोग परेशान मत होइए, मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगी, इसी ग्रुप में शेयर कर दूंगी। हेलो आप मैम। हेलो हाँ बस पूछिए। हेलो हाँ पूछिए। हाँ मैम। हाँ मैम जो ऑब्जेक्ट हम लोग को मिड सेमेस्टर में मैडम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, तो मैडम थोड़ा पढ़ाते समय उसको हाईलाइट थोड़ा कर दीजिएगा तो हम लोग ज़्यादा क्लियर हो मैं जाएगा। आपको असाइनमेंट दे दूंगी जिससे आपको मतलब आइडिया लग जाए कि किस तरीके के आ सकते हैं क्वेश्चन। यस मैम। ठीक है, कुछ रीजनिंग ठीक वाले है। क्वेश्चन जैसे सेम में आपका पूछा जा सकता है कि वाई सैंपल हैज टू बी कंडक्टेड, वाई सैम हैज टू बी ऑपरेटेड अंडर वैक्यूम। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग मतलब तैयार करिएगा जो रीजनिंग वाले होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको कुछ दे दूंगी, प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट दे दूंगी, अभी भी गिविंग यू द असाइनमेंट। ओके एनी मैम। अदर क्वेरी, एनी अदर क्वेरी? नो मैम। ओके, तो आप लोग लीव कर जाइए। सॉरी मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई नेटवर्क इश्यू के कारण, और मैं आपका ये पे आगे बता दूंगी ये वाला पार्ट। ओके 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 मैम। ओके, थैंक यू सो मच। ओके मैम, थैंक यू। ओके ओके, मैम वो स्लाइड शेयर कर दीजिएगा हम लोग को। हाँ हाँ वो शेयर कर दूंगी। और मैडम अच्छा स्लाइड अभी शेयर करके हम लोग हाँ देख आप लोग लेंगे कि जरा वेट करिएगा, मुझे लग रहा है कि अभी कनेक्ट हो रहा है शायद। अगर होता है तो मैं ये वाला पार्ट पूरा कर देती हूँ, प्लीज 2 मिनट रुक जाइएगा, प्लीज वेट कर लीजिएगा। ये अभी भी कनेक्शन फिर से ओके आया है, मैम। हो सकता है हो जाए। हाँ अब हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, तो प्लीज थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए। मैं इसको कंप्लीट ही कर देती हूँ। स्क्रीन तो विजिबल है आपको ये? तो आई वाज टॉकिंग यस अबाउट मैम। एनर्जी डिस्पर्सिव एक्स-रे एनालिसिस, दैट इज ईडीएक्स। तो ये यस वाली मैम। स्लाइड मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दी थी, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन बता दिया था इसका। तो आई एम मूविंग फॉरवर्ड। That is, an energy dispersive X-ray analyzer is used to provide elemental identification and quantitative compositional information. The data generated by EDX analysis consists of spectra showing peaks corresponding to the elements making up the true composition of the sample being analyzed. तो सपोज आप कोई मटेरियल ए बी का आप ईडीएक्स कर रहे हैं, तो ए और बी आपका मतलब प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, ये इससे आपका कंफर्म हो जाता है, क्या कंपोजिशन प्रेजेंट है, ये ईडीएक्स एनालिसिस से ये श्योर हो जाता है। तो जिससे स्पेक्ट्रम आता है उससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आपका ए और बी उसमें प्रेजेंट है। So that scattered electron images in the SEM display compositional contrast that results from different atomic number elements and their distribution, which I explained you in last slides. So energy dispersive spectroscopy allows one to identify what those particular elements are and their relative proportion, that is atomic person for example, वो मतलब जो भी आपके एलिमेंट्स हैं वो किस प्रोपोर्शन में प्रेजेंट हैं, ये ईडीएक्स से आपको बिल्कुल प्रिसाइजली पता चल जाता है। So initial EDX analysis usually involves the generation of an X-ray spectrum from the entire scan area of SEM. EDX is basically used to analyze the concentration of elements present in the sample, while XRD is used to identify the crystal structure and compound type. So I'm discussing the principle of EDX. Is there any problem? Slide is moving. I am in the slide that is having title principle.
So during EDX analysis, the specimen is bombarded with an electron beam inside the scanning electron microscope, since it is associated in the same instrument. So the bombarding electrons collide with the specimen atoms, own electrons, knocking some of them off in the process. A position vacated by an ejected inertial electron is eventually occupied by a higher energy electron from an outer shell. To be able to do so, however, the transferring outer electron must give up some of its energy by emitting an X-ray. The amount of energy released by the transferring electron depends on which shell it is transferred from. तो ये है, L है, M है, N है, पे डिपेंड करेगा. As well as which shell it is transferring to. किस शेल में जा रहा है आपका L से K में जा रहा है कि M से K में आ रहा है, इससे भी डिपेंड करेगा. Furthermore, the atom of every element releases X-rays with unique amount of energy during the transferring process. Thus, by measuring the amount of energy present in the X-rays being released by a specimen during electron beam bombardment, the identity of the atom from which the X-rays was emitted can be established. So, two types की X-rays यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है. X-ray generation आपकी दो तरीके का generation है. Two basic types of X-rays are produced on inelastic scattering. Inelastic inflection of the electron beam with the specimen atoms in the SEM. Characteristic X-ray results when the beam electrons eject inner shell electrons of the specimen atom and continuum, that is Grimm's-Strang axis, which I explained you in last lecture. X-rays results when the beam electrons interact with the nucleus of the specimen atom, that are called as Grimm's-Strang X-rays or continuum X-rays. So characteristic X-rays reveal themselves as peaks imposed upon a background of continuum X-rays. So this slide is explaining how these characteristic X-rays are produced. A hole in an inner shell, that is K shell, of the specimen atom is generated by an incident high energy electron that loses the corresponding energy transferred to the ejected electron. The hole in the K shell is subsequently filled by an electron from an outer shell. यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लिया है, सपोज L3 शेल से इलेक्ट्रॉन जो है वो पोजीशन में आ रहा है, K में आ रहा है, जहाँ पे होल स्टेट हुआ है. So the superfluous energy is emitted as a characteristic X-ray quantum. The energy of X-ray is characteristic of the specimen atomic number from which it is derived. तो जो X-ray प्रोड्यूस हो रही है आपकी, पहले तो K शेल से जो इलेक्ट्रॉन L शेल की तरफ गया, फिर नेक्स्ट हायर शेल से जो इलेक्ट्रॉन आपको K शेल की तरफ आ रहा है, तो वहाँ पे जो भी इस प्रोसेस में एनर्जी जो रिलीज हो रही है, दैट इज बेसिकली फोटोनिक एनर्जी और एक्सरे, जिससे कि हम अपनी एलिमेंटल एनालिसिस कर सकते हैं. So another sequence of event is possible. Pardon? कुछ कहना चाह रहे हैं क्या आप लोग? Okay, so another sequence of event is possible. No, ma'am, we continue. Okay. Another sequence of event is possible following the ionization of the specimen atom. The hole in the K shell is filled by an electron from an outer shell, here L1. So the superfluous energy is transferred to the another electron. Suppose L3 को ये एनर्जी अगर ट्रांसफर हो जाती है, तो वो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वहां से इजेक्ट हो जाता है, उसको ओजे इलेक्ट्रॉन कहते हैं. So ओजे इलेक्ट्रॉन हैव एन एनर्जी रेंज फ्रॉम 50 to 2500 electron volts. Mean free path within the specimen of 0.122 nanometer, which means that only OJ electron escaping from a depth of 0.122 nanometer, 5 to 10 atomic layers, will not have undergo additional inelastic interactions with the specimen atom after the generation. So OJ spectroscopy is truly true surface analysis methodology. So OJ spectroscopy is another method for surface detection. So that phenomena is also there in soft stand electron spectroscopy. So the energy of OJ electron, like the X-ray, is characteristic of the specimen atomic number from which it was derived. So OJ electron production is favored for low atomic number elements. Characteristic X-ray production dominates for high atomic number elements. तो इससे जो कंबाइंड एनालिसिस हो रही है वो आपके OJ इलेक्ट्रॉन की हेल्प से भी हो रही है फॉर लो एटॉमिक नंबर्स, एंड फॉर हाई एटॉमिक नंबर्स एक्स-रे की हेल्प से भी हो रही है, जो फोटॉन्स की तरह इमिट हो रहे हैं. तो कॉन्टिन्यूम एक्सप्रेस का प्रोडक्शन कैसे होता है, इस स्लाइड में एक्सप्लेन किया हुआ है. कॉन्टिन्यूम एक्सप्रेस रिप्रेजेंट द बैकग्राउंड ऑन विच द कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेस आर इम्प्रूव्ड. So they are considered machines by a microscopist because the characteristic axis used for elemental identification needs to be differentiated from them.
A good peak to background ratio is essential for proper identification of elements using their characteristic activity. So the continuum X-ray results when beam electrons interact with the Coulomb electric field of the nucleus of the specimen atom. On interaction, the beam electron energy loses that can be given off as a continuum X-ray. The distribution of this energy loss is continuous and not characteristic of the specimen atomic number. तो ये जो characteristics इसमें आ रहे हैं ये specimen के atomic number के नहीं होते हैं. The closer the beam electron comes to the nucleus of the specimen atom, the stronger is the interaction between it and the Coulomb field of the nucleus. The more energy is lost by the beam electron and the more energetic is the X-ray photon that is emitted. So wide misses of the specimen atomic nucleus by the beam electron are more probable. So the result is more continuum X-rays at lower energies are observed. So what is the output of an EDX analysis? Basically, what information we are receiving from this EDX analysis. So EDX spectrum is just a plot of high frequency and X-rays received for each energy level from lower to high energy level. And EDX spectrum normally displays peak corresponding to the energy level for which the most X-rays has been received. Each of these peaks are unique to an atom and therefore corresponds to a single element. तो इसकी हेल्प से हम ईच एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो पीक मिल रही है उससे हम एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो द हायर अ पीक इन अ स्पेक्ट्रम द मोर कंसंट्रेटेड द एलिमेंट इज इन द स्पेसिमेन. तो इसके लिए कभी डायग्राम भी आपको मैं दिखा रही हूँ. आई होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. डायग्राम इज विजिबल और नॉट? Yes, ma'am, visible. Yes, it is there. So an EDX spectrum plot not only identifies the element corresponding to each of its peaks, but the type of X-ray to which it corresponds as well. For example, a peak corresponding to the amount of energy produced by X-rays emitted by electron in L shell going down to K shell is identified as a K alpha peak, जैसे कि इस डायग्राम में आपका दिखाया गया है. जो आपका K to L शेल जो ट्रांसमिशन हो रहा है, फिर आपका L शेल से जो K शेल की तरफ आपका हो रहा है, इसको हम K alpha peak कह रहे हैं. So the peak corresponding to X-rays emitted by M shell electron giving to the K shell is identified as a K beta peak. So अकॉर्डिंगली हम इस तरीके से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जो पहला वाला डायग्राम है बेसिकली ये एनर्जी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को दिखा रहा है. तो ये इंटेंसिटी वर्सेस एनर्जी आपका डायग्राम है. तो डिफरेंट एनर्जीज आपकी ये एक्सिस पे हैं. जैसे ऑक्सीजन दिखा रहा है, मैग्नीशियम है, सिलिकॉन है. तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी एनर्जी है उससे ये आपका जो एलिमेंट्स है ये आइडेंटिफाई होते हैं. और अगर ये एल से के शेल जो हो रहा है तो इसको के अल्फा पीक कहते हैं. एम से अगर के शेल में ट्रांजिशन हो रहा है तो हम इसको के बीटा पीक कहते हैं. जो फोटोन हमारा ट्रांसमिट हो रहा है तो हम के बीटा पीक कह रहे हैं. इसको हम समराइज कर रहे हैं लेक्चर को आपके. Differences between light and electron microscope were discussed. First part. Then principle of scanning electron microscope was discussed. Where accelerated electrons in SEM carry significant amount of kinetic energy, and this energy is dissipated as a variety of signals produced by the electron sample interaction. Then the incident electrons are distributed in the solid sample. Distributed means कि जब इलेक्ट्रॉन सैंपल के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो वो कुछ एनर्जी अपनी यूज करेंगे. सेवरल इंटरेक्शंस बेसिकली वहाँ पर होंगे. Third, electron sample interaction produces various signals such as secondary electrons that produces SEM images, back scattered electrons. और मैंने secondary और back scattered electrons का आपका डिफरेंस भी डिस्कस किया था. secondary electrons आपके स्लो थे, back scattered electrons बेसिकली फास्ट थे. Refracted back scattered electrons that are used to determine crystal structure, orientation of minerals, photons, visible light, and heat. And SEM EDS provides chemical analysis of the field of view of spot analysis of minute particles. So more than 90 elements can be detected with low atomic number detectors using the SEM EDS method. The microchemical analysis also a non-destructive test. तो SEM EDS में भी SEM में भी किसी भी तरीके का डिस्ट्रक्शन नहीं है ड्यूरिंग दिस इलेक्ट्रॉन सैंपल इंटरेक्शन. और अगर EDS को भी हम यूज कर रहे हैं SEM के साथ, वहां पर भी किसी भी तरीके का डिस्ट्रक्शन नहीं है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. तो इट इज कॉल्ड एज द non-destructive technique. And this is the reference book which I have used for this. That is a beginner's guide to scanning electron microscopy by Anju. He wrote this book in 2018, and some images I have used from the website. So if you have any question now, you can ask. Do you have any question? Any one of you? If you have any question, please ask.
Okay, then all of you please leave. Thank you so much. Thank you so much. I will be sharing the PDF. थैंक यू। Okay, ma'am. Thank you. पूछना तो नहीं है आप लोगों को? आप लोग कोई हेजिटेट नहीं करिए, अगर कुछ है क्वेरी तो प्लीज पूछिए। ओके, आप अगर नेक्स्ट टास्क भी पूछ सकते हैं, अपने क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। हम लोग एक डिस्कशन के लिए भी एक गूगल मीट पे बुला सकते हैं और आप डिस्कस कर सकते हैं जो भी आपको समझ में ना आए। ओके, थैंक यू सो मच। आप लीव कर जाइए, प्लीज लीव कर जाइए।